Hello students, welcome back to our channel KCYC. कैसे हो? How are you doing? In this video, we will be doing आपका problem set from your chapter trigonometry. Which the trigonometry का जो problem set है, it's very simple. It's actually revision ही है. Only the first and the last sum that is we are not done in the exercise तो वो नया है. बाकी का जितना बीच में sums है all are revision. तो let's start with your problem set 8 from your chapter trigonometry. Start with your problem set. Let's start with your problem set number 8. तो problem set number 8 करने के पहले ये basic formula सीखो. This is over sin 90 minus theta. लेकिन अब theta a कुछ भी रहेगा तो दूसरा आएगा cos 90 minus theta और एक आएगा tan 90 minus theta. It's very simple. sin 90 minus theta का फॉर्मूला होता है cos theta. cos का होता है that is sin theta और tan का होता है that is equal to cot theta. अभी मैं ये क्यों कर रहा हूँ? Because your first fill in the blank and the last sum है ना, that is your first fill in the blank and the last sum दोनों ये formulas के ऊपर है. If you check with your first fill in the blank, that is MCQs दिया हुआ है, which of the following statements are true? आपको ना चार options दिया हुआ है, that is sin theta is equal to what they given over here, sin theta is equal to cos 90 minus theta. आपको कौन सा राइट है वो बोलने का? This is your sin theta is equal to tan 90 minus theta. You got over here cos theta, ये थर्ड ऑप्शन था, is equal to tan. आंसर आ गया राइट वाला. If you are okay, तो कौन सा आंसर इसमें का राइट है वो बोलने का है आपको. tan theta is equal to tan 90 minus theta. तो व्यू चेक which is your right one. तो this option is your right one. So your option is that is A. You should write that is your option is A. And what is it? That is you can write over if you want to can write over that is sin theta is equal to cos 90 minus theta. ये right option है. Now if you check with your fifth sum. Fifth sum में भी यही है. Now be proper and check fifth कैसा करने का. फिफ्थ में तीन fill in the blanks है. फिफ्थ आई एम टॉकिंग अबाउट fill in the blanks. पहला क्वेश्चन है sin 20 is equal to cos and then put over. अभी कैसा बोला हुआ है बच्चा लोग? sin theta is equal to cos 90 minus theta बराबर है. तो you should say this is sin 20 is equal to अभी ये वाला फॉर्मूला ये sin theta तो ये वाला यूज करेगा that is equal to cos 90 माइनस क्या लिखने का 20 या उल्टा cos 90 माइनस थीटा इज दिस इज cos 90 माइनस थीटा इज sin थीटा. इसको अगर आप सब्स्टिट्यूट करेगा दिस इज sin 20 एंड व्हाट इज दिस इज हाउ मच डिग्री? दिस इज 70. सो सिंपल. नाउ इफ यू चेक विद योर नेक्स्ट वन, सेकंड में लिखा हुआ है दैट इज tan 30 into tan 30 into tan dash is equal to 1. अभी इसके लिए कोई आपको इजी है दैट इज टेबल में जाओ. टेबल में इफ यू चेक टेबल में बच्चा लोग दैट इज tan 30 दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन द रूट 3 एंड tan 60 दैट इज इक्वल टू रूट 3. इफ यू डू 1 अपॉन रूट 3 इनटू रूट 3 कैंसिल होता है क्या है 1 व्हिच इज ऑलरेडी ओवर हियर. तो व्हाट शुड बी ओवर हियर इज tan 60. दिस इज योर सेकंड वन. एंड व्हाट हाउ विल डू ओवर हियर थर्ड वन? थर्ड वन में कैसा बोला है उन्होंने दैट इज cos 40. फर्स्ट वन के जैसा ही है. cos 40 इज इक्वल टू sin. यू गॉट अ बॉक्स ओवर हियर. अभी cos और sin का रिलेशन है तो यूज से दिस इज cos 40 इज इक्वल टू sin. cos थीटा इज इक्वल टू sin 90 माइनस थीटा. दिस इज ओवर हियर cos 40. ये सिंपल करो 90 माइनस कितना होता है बच्चा? दैट इज यू गेट योर आंसर 50. So this is how you do the fifth one. This is your first MCQ. Now see with your MCQ, second one MCQ is बहुत simple है. We can do directly क्या बोला? Which of the following is the value of sin 90? तो sin 90 का वैल्यू क्या हो जाता है बच्चा? sin 90 is equal to 1. तो your answer is D. You have to write board exam में ऐसा लिखने का that is your answer is D which is 1. The next one if we check over here sum number 3 में 3 MCQ में है. That is 2 tan 45 degree plus cos 45 degree minus sin 45 degree. What is the value? अभी you should know the tables. tan 45 का वैल्यू होता है बच्चा 1. cos 45 होता है 1 upon root 2.
साइन 45 होता है 1/√2, 1/√2, 1/√2 कैंसिल. सो दिस इज व्हाट आई गेट ओवर 2 प्लस ये हो गया 0. योर आंसर इज 2. एंड इफ यू चेक विद योर आंसर दैट इज सी, दैट इज 2. देन यू चेक विद योर सम नंबर 4. अभी यहाँ पे देखो ये सम वापस जो पहला किया था अभी उसी वैसे cos 28 और क्या लिखा है यहाँ पे दैट इज sin 62. ट्राई टू अंडरस्टैंड. अभी अगर आप लोग प्रॉपरली चेक करो ना तो 28 प्लस 62, अगर 28 प्लस 62 को ऐड करोगे ना तो 90 होता है. ये 28 और 62 को ऐड करोगे तो 90 होता है. तो यू कैन चेक आइदर दिस और आइदर दिस. जो चेंज करना है मैं ऊपर वाला चेंज करता हूँ. cos थीटा का फॉर्मूला क्या बोला, sin 90 माइनस थीटा, जो अभी इसके पहले किया था. And this is as it is sin 62. Now do your calculation. मतलब calculation मतलब काउंट करो कितना होता है. 60 माइनस 90 माइनस 28 कितना होता है 62 अपॉन 62. sin 62 sin 62 कैंसिल. your answer is 1. तो try to understand. ये भी previous sum के जैसा है. So what you get your option? Your option is D, which is 1. Now what we'll do over here? Now we'll do with a very simple examples. जो आपके पास है ना राइट एंगल ट्राइंगल दिया और this is what we did. वो लास्ट टाइम में बोला था ओल्ड ऋतिक एंड इज ओल्ड ऐश्वर्या, बिकॉज डायग्राम आ गया अभी. दिस इज U, दिस इज T, दिस इज S, दिस इज U. और क्या क्या पूछा हुआ है. ओके यहाँ पे दिया हुआ है दैट इज TS. दिस TS इज इक्वल टू 5. देन दिस साइड SU इज इक्वल टू 12 एंड देन बहुत कुछ पूछा हुआ है. उसके पहला है ना You have to find this by Pythagoras theorem. बच्चा लोग यहाँ पे सीधा बोला हुआ है ये 5 है ये 12 है. यहाँ पे K ने यूज करने का डायरेक्टली स्टार्ट करेगा. दैट इज इन राइट एंगल ट्राइंगल TSU. U से हुआ by Pythagoras theorem. And what do you get your Pythagoras theorem? This is the hypotenuse. That is UT square is equal to TS square plus SU square. Simple. TS is 5 square. This is 12 square. This is 25 plus 144. और इसको ऐड करोगे ना बच्चा तो आता है 169. एंड therefore यहाँ पे लिखता हूँ UT is equal to 13. तो this is what you got over here 13. अब एक एक करके सब करेंगे. क्या क्या पूछा है उन्होंने, let's go with that. So they have asked sin t, cos t, tan t और बाकी सब. that is they have asked sin t, cos t, tan t, and similarly I'll put it over here sin u, cos u and tan u. Now we'll go with your formulas over here. So how will you go with this? This is very simple. I said old Hrithik and is old Aishwarya, that is opposite upon hypotenuse, adjacent upon hypotenuse, opposite upon adjacent. T है बच्चा यहाँ पे, तो T में ये opposite है, ये T है तो ये opposite, ये adjacent. So opposite आपका होएगा SU upon hypotenuse, that is TU. You can put your values over here. Later I'll put with blue color. Adjacent ये, that is over here TS upon this is TU, and this is the opposite SU upon TS. एकदम simple है, values डालो. So this becomes your 12 upon 13. This becomes your 5 upon 13. And this is opposite upon adjacent. And that is 5. If you go with this, again the same thing. This is old Hrithik and is old Aishwarya. That is opposite, hypotenuse, adjacent, hypotenuse, opposite, adjacent. Now U है तो आपको यहाँ से देखना है, यहाँ से ये opposite है अभी. So you get over this is TS. Hypotenuse from everywhere it will be same. The side opposite to 90 degree is your hypotenuse. Adjacent यहाँ पे आ जाएगा SU upon this is TU. Opposite आ जाएगा this is TS upon adjacent, that is SU. Now put your values over here. So this is over here TS. So this one will be 5 upon 13. 12 upon 13, and over here this is opposite, that is 5 upon 12. So this is how you have to do your sum number 2. This is sum number 3. Sum number 3 is exactly अभी जो 2 मिनट पहले हमने किया वही है. So this is what you get over here. यहाँ पे है 90 है. This is a right angle triangle.
this is x, y, this is over here z. What do you get over? This is 8, this is 7. और फिर sin cos z, tan z, y पूछा है. तो first you have to find out this set, and that same will go over here, that is in right angle triangle, that is z x y. याद रखो 90 डिग्री x है तो x बीच में आना चाहिए. So we say over here that is by Pythagoras theorem. अब इतना बार करने का तो you know Pythagoras theorem very nicely now. That is zy square is equal to xz square plus xy square. Put your values, this becomes your 17 square, xz, this is 8 square, and this one will be as it is xy the whole square. ये बनेगा 289, this is 64, and this is xy the whole square. This is 289 मेरे साइड में, minus 64, this is xy the whole square, and हो गया बच्चा, this is xy square is equal to 225, and therefore we say xy, this becomes your 50. अभी जो पूछा हुआ है we'll go with that. So it's very simple. That is what they asked is, that is sin z, cos z, and tan z, and then again over here that is sin y, cos y, and tan y. Keep in mind they cannot ask you x नहीं पूछ सकते. Same. Now you can directly start old रत्ते का भी तो हो गया आप. That is z का opposite, यहाँ पे z है बच्चा, तो opposite will be xy upon hypotenuse is zy. So we'll get over, this is 15 upon 17. Cos adjacent, that is xz upon, that is zy, it is 8 upon 17. This is tan opposite side, that is xy upon adjacent side, that is xz. So this is 15 upon 8. Same over here, sin y, sin opposite side. अभी y यहाँ से आ रहे हो, so इसका opposite यहाँ से है तो y ये opposite है, तो you get over, this is xz upon hypotenuse is zy. This is 8 upon 17. Cos y, that is adjacent side, xy upon hypotenuse, that is zy. So this one will be x. This is 15 upon 17, and this is your xz opposite upon adjacent, and this is 8 upon 15. And this is how you have to do your sum number 3. We'll do with your last sum of your chapter trigonometry का fourth sum करते हैं, और फिर आपका 9th का trigonometry खत्म हो जाता है. ये अभी आपको K मेथड आएगा. कैसा मैं बताता हूँ. This is over your triangle is x. Oh sorry. This is your triangle fourth sum है, not x. It is L. This is M, and this is what you get over here N. Then they said over here angle N. This is equal to theta. And okay हो गया. That's all. Angle M 90 degree बोला हुआ है. And cos theta. Okay, now pay attention. So in this triangle, that is in, we get over, this is right angle triangle LMN. We got over angle LMN is equal to 90 degree, and angle LNM, this is equal to theta. अब start करते हैं. यहाँ पे क्या दिया है, cos theta. They are given, that is cos theta is equal to 24 upon 25. I think you remember this sum. This is cos theta is equal to 24 upon 25. Start करते हैं, और हमको मालूम है cos theta is equal to adjacent side, that is mn, upon hypotenuse, that is ln. Now what we'll do over here? We'll go over here with your right angle triangle, and पहले comparison करते हैं. We'll say that is, since let, we can say that is let, ये इसके साथ, that is mn is equal to 24k. मैं last time में बोला था last video में, why we put this k, and this is 25k. तो ये आ गया 24, this is over here, ये आ गया 24k, ये आ गया 25k. Now we'll find out this. Though we say over here that is in right angle triangle LMN, we say over here by Pythagoras theorem. What do you get बच्चा लोग over here? ln square is equal to lm square plus mn square. ln square कितना है ये? This is 25k the whole square. lm square is lm square. mn is how much बचा? This is 24k the whole square.
We can do this is simple. 625 k square. This is LM square, and this is 576 k square. That comes on my side. 625 k square minus 576 k square is equal to LM square. Do your subtraction. How much you'll get over here? That is, if you do your subtraction, that is 625 minus 576. This is 1 over here 1. This is over here 9. This is 5. This is 49. So you get over this is LM square is equal to 49 k square bacha, and LM is equal to 7k. Now what is asked, इसमें छोटा सा एक्स्ट्रा पूछा हुआ है. If you check, पहला पूछा है what is sin theta cos theta, and then what is sin square theta and cos square theta. पहला sin theta cos theta करते हैं. I'll get it over here only. That is V से sin theta, that is you know sin theta is equal to opposite side, that is LM upon hypotenuse, and that is your LN. So what do you get over here? That is, we'll put this value. This is sin theta LM. We got LM. This is 7k upon LN. This is LN is already on the board. 25k. k और k गया बच्चा, तो ये आएगा sin theta is equal to 7 upon 25. तो अगर आपको sin theta 7 upon 25 आ गया, आपको स्क्वायर पूछा हुआ है, तो ओनली राइट हुआ है therefore. इसको बोलते हैं sin स्क्वायर थीटा. 10th में बहुत बार आएगा. अगर इधर स्क्वायर किया, इधर भी स्क्वायर करने का, दिस इज 49 upon 625. This is your sin square theta. Same thing if you do for your cos theta. So you get over cos theta adjacent side, that is, I mean cos theta तो already they are given over here, so no need of finding out cos theta, so directly you can write over here. That is you knew, question में ही दिया था what is cos theta. So cos theta was already they are given 24 upon 25. So you can say this is over cos square theta is equal to 576 upon 625. अगर आपको tan theta पूछा है तो same what will do with your tan theta, you will get tan theta. अगर आपको स्क्वायर बोला है तो आपको दोनों साइड में स्क्वायर करने का है. टेक्स्ट बुक में वही पूछा हुआ है, cos नहीं पूछा है, tan पूछा है, तो we'll do that also. Simple. That is tan theta is equal to your opposite side, that is LM, upon your adjacent side, this is MN. So now we'll go over here with LM. This is 7k. MN, if we check with MN, they are given over, this is 24k. k के बच्चा कैंसिल हो गया, and tan theta is equal to 7 upon 24. अभी सपोज इसका स्क्वायर पूछा हुआ है, so therefore we can say this is your tan square theta, that is equal to 49. इसका स्क्वायर है 576. तो मैंने तीनों भी कर दिया आपके लिए, tan square, cos square and sin square. So this is how we have to do with your trigonometry. So over here we finished with your chapter trigonometry for 9th standard. In the next video we may start with a new chapter. So till then, bye bye, tata, take care.